हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मंथन जीके गुरुकुल। सोशियोलॉजी की इस रिवीजन सीरीज में आज हम चैप्टर 1 का टॉपिक करेंगे, सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज। इसमें पहला टॉपिक है सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स आपका क्या? इकोनॉमिक्स बेसिकली इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज, राइट? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ऑल, वेयर एज सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, द ओवरऑल सोसाइटी। ठीक है। अब जो इकोनॉमिक्स है वो प्रोडक्शन के बारे में है, राइट? And but if you see the interlinkages of these two, we have seen the production also happens in certain social settings, in certain social groups. So people, they work in certain social groups. For example, in India, the caste system that shapes the production activities as well. पुराने टाइम से जो है the different castes, they have been related to certain different occupations. Even in the modern times also, there are still this phenomena is prevalent. And specifically if you see uh, the work like cleaning work, the sanitation work, manual scavengers, so low caste people, they are linked, they are involved in these activities. So इस तरीके से क्या है कि तो जो सोशल ग्रुपिंग है, सोशल नॉर्म्स हैं, कल्चरल नॉर्म्स हैं, these are actually shaping the production activities. Consumption also, for example, conspicuous consumption, right? Conspicuous consumption. Alfred Marshall ने कहा है कि economics deals with how man earns and spends money. Earns money means production and spends money consumption. तो कैसे इंसान जो है पैसा कमाता है और खर्च करता है. But if you see, all these things, they happen in certain social background. So there is interlinkages between these two as well. अब जो economic institutions हैं, they have been viewed differently across the different world by the various social thinkers. अगर हम capitalism की बात करें, Indian capitalism is different from the Japanese capitalism. However, if you see, capitalism is the economic concept, but the capitalism is different in these two countries. Also, it is different from the Chinese capitalism. ठीक है? Japanese capitalism is more of nationalist capitalism. Chinese is more of socialist capitalism. Indian capitalism, it founds its origin from the basis from the compulsive capitalism. अब वेबर ने स्टडी किया प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. ठीक है. तो कैपिटलिज्म कैसे ग्रो किया, क्या स्पिरिट है उसके पीछे. सो द इट प्रोवाइडेड द सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू द कैपिटलिज्म कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स है उसके पीछे, राइट? अब मार्क्सिस्ट की बात करें, सो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेसिकली शेपिंग द सोशल सुपरस्ट्रक्चर. सो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल सुपरस्ट्रक्चर है. तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो है इट इज डिसाइडिंग द वेरियस सोशल क्लासेज एज वेल. ठीक है. द वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस आर बीइंग शेप्ड बाय द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ए मैन डिसाइड्स द सोशल बिहेवियर ऑफ मैन. अब डरखाइम ने जो इकोनॉमिक थ्योरी उस टाइम पे इकोनॉमिस्ट की थी, डिवीजन ऑफ लेबर गिवन बाय एडम स्मिथ. So Durkheim rejected the classical economic theory and in fact gave sociological explanation to division of labor. Or you can further discuss the sociological explanation to division of labor by Durkheim in terms of mechanical solidarity and organic solidarity. Further, the convergence can be seen in terms of economic sociology. So economic sociology, the branch of sociology that deals in economics. जेंडर बस्टिंग, देखो बस्टिंग है इकोनॉमिक्स रिलेटेड, बट व्हेन कम्स विद जेंडर, कन्वर्जेंस ऑफ दीज टू. फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स, इंक्लूसिव ग्रोथ, डेफिनेटली when the objective of growth is to reach the benefits to all the sections of society, even to the downtrodden, तो इंक्लूसिव ग्रोथ है. ठीक है. तो ये किसके बारे में बात कर रही है? इकोनॉमी को यूज करना है बट फॉर द सोशल गोल्स. रिचर्ड थेलर got the Nobel Prize in economics in 2017, and the topic was behavioral economics. So behavioral economics, when economics deals with the
behavior of people, means including the behavior, and behavior shapes the economics, right? So again, convergence of these two disciplines. Even in economic survey 2018-19, one of the chapter was policy for the real people, not robots. Ab now these real people, they they live in certain social background, certain social settings, ठीक है? So their behavior decides the, so यहाँ पर policy of the government is to take the benefits, economic benefits to the people actually, and people they have certain cultural background, ठीक है? तो यहाँ पर दोनों disciplines converge कर रहे हैं. Pierre Bourdieu said that जो cost of externalities हैं वो भी include की जानी चाहिए in any production activity. The corporation should also include the cost of externalities like crime, suicide, pollution, ठीक है? So that's for this topic. Next one is sociology and psychology. अब आपका साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज एक्चुअली साइंस ऑफ बिहेवियर. बिहेवियर को स्टडी करता है, इंडिविजुअल माइंड सेट को, ठीक है? इंडिविजुअल माइंड को स्टडी करना, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स माइंड को स्टडी करना, मेंटल सिस्टम. इट्स मोर अबाउट मेंटल सिस्टम साइकोलॉजी. वेयर सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, to study the society. So to study the behavior of individual, but in certain social group in society, ठीक है? Because the individual live in certain social institution, and so ultimately it studies the social system, whereas psychology studies the mental system, ठीक है? अब now there are two different extremes have been taken by the thinkers. One strand that gives primacy of psychology, and that is by J.S. Mill and Sigmund Freud. So as per J.S. Mill, all laws they are derived from the law of mind, ठीक है? तो साइकोलॉजी को इंपॉर्टेंस दिया है. सिगमंड फ्रूड इन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी जस्ट मियर एक्सटेंशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, तो यहाँ पर भी साइकोलॉजी को प्राइमेसी दी गई है. नाउ फ्रॉम डर्कहाइम पॉइंट ऑफ व्यू, डर्कहाइम in his study of suicide, he ignored in fact, he ignored the psychological dispositions of that time, ठीक है? उस टाइम पर सुसाइड की जो एक्सप्लेनेशंस दी गई थी वो तो पहले नॉर्मली साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस थी, बट डर्कहाइम ignored those and gave the sociological explanation of suicide. Now the intermediate stand has been taken by certain thinkers, and Ginsburg gave sociological explanation to, in fact, as per Ginsburg's, that sociological explanation they can be more firmly established. कब हो सकता है ये? When by using the psychological laws. तो psychological laws को use करके sociological explanation they get more firmly established. वेबर कहता है, वेबर के अकॉर्डिंगली जो sociological explanations हैं, ठीक है, of social behavior किस पे डिपेंड कर रही है? they depend on the underlying meanings के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है? Girth and Mills के अकॉर्डिंग जो रोल is the meeting point of both of the disciplines, sociology and psychology. And as per Girth and Mills, social psychology जो है, so social psychology will be the branch of psychology that deals in the social. So social psychology is, it interplays between individual character and social structure. इसके बीच में interplay करता है. And social psychology is in fact a bridge between individual character and social structure. So next topic करते हैं. नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री के बारे में. सो हिस्ट्री एक तरह से इट स्टडीज द पास्ट, ठीक है? तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं? पास्ट को स्टडी करते हैं. वेयर इफ यू सी इन सोशियोलॉजी, द सोशियोलॉजिस्ट दे आर मोर इनटू स्टडीइंग द मॉडर्न सोसाइटी, सो काइंड ऑफ यू कैन से रिसेंट पास्ट या कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को स्टडी करते हैं. तो ये किसमें डिफरेंस हो जाता है जो अगर आप देखते हैं. देन हिस्ट्री जो है मोर ऑफ एक तरह से टाइम फ्रेमवर्क के दौरान, अगर हम पर्टिकुलरली पहले की बात करें तो हिस्ट्री कैसे व्हाट इज स्टडी टाइम फ्रेम के दौरान, हाउ विद टाइमलाइन की कैसे क्या कब हुआ, ठीक है? राइट. सो इवेंट्स के बारे में, राइट, कि डिफरेंट टाइम पे क्या क्या इवेंट्स हुए. वेयर सोशियोलॉजी जो है वो एक तरह से हाउ द इवेंट्स हैपेंड, कैसे हुए, किस सोशल सेटिंग में हुए, राइट, इन व्हाट सोशल सेटिंग्स.
इट स्टडीज द नेचर ऑफ रिलेशंस के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें, सोशल इंस्टीट्यूशन स्टडी करते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से डिफरेंसेस, अगर आप कंपार्टमेंटलाइज डिफरेंसेस देखें, हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री जो आपका एक तरह से डिस्क्रिप्टिव है, राइट। सोशियोलॉजी में आपका डिस्क्रिप्टिव भी है और आपका नॉर्मेटिव भी है। नॉर्मेटिव, अगर आपको कहा नॉर्मेटिव, यू कैन फाइंड इन मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस इन फेमिनिस्ट। अब अगर जैसे हिस्ट्री को देख, टाइम और इवेंट्स ये देखते हैं, टाइम और इवेंट्स का लॉन्ग स्टडी करते हैं, बट वी हैव सीन दैट इवन इन द रिसेंट पास्ट, वी हैव सीन इन द मॉडर्न हिस्ट्री, ये टाइम और इवेंट्स के साथ में आजकल जो है, यू जस्ट लुक आउट द एनसीईआरटीज, जो नई एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटीज हैं, वहां पर केवल इवेंट्स को नहीं स्टडी करें, नॉट ओनली द किंग्स एंड हाउ देयर लाइव्स, राइट। अब उनको फैमिली इंस्टीट्यूशंस पे भी फोकस है, उनके चैप्टर्स, लुक आउट द चैप्टर्स ऑफ द न्यू एनसीईआरटीज। सो एक तरह से वो कोलेबरेट कर रहा है, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी जो है, इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड एन एग्जाम्पल, राइट। जी होवार्ड ने क्या, होवार्ड ने बोला था कि भाई हिस्ट्री इज पास्ट सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इज प्रेजेंट हिस्ट्री, राइट। इसको याद रख लेना है, डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आ सकती है और यू कैन यूज दिस इन आंसर राइटिंग एज वेल। तो हिस्ट्री आपकी पास्ट सोशियोलॉजी है, ठीक है। सोशियोलॉजी बिकॉज आपका मॉडर्न सोसाइटी को स्टडी करती है, अगर वो पास्ट का देखेंगे तो क्या बन जाएगा, वो कह रहे हैं हिस्ट्री है। सिमिलरली सोशियोलॉजी इज प्रेजेंट हिस्ट्री, वो दिखा रहा है कि सोशियोलॉजी जो है, अगर हिस्ट्री को हम प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी टाइम में स्टडी कर देंगे, यानी रिसेंट पास्ट स्टडी कर देंगे हिस्ट्री का, तो वो सोशियोलॉजी हो जाती है, बिकॉज दोनों के जो है सब्जेक्ट मैटर और ये कैसे काम करें, ओवरलैप कर रहे हैं। ये जी होवार्ड ही बताना चाह रहे हैं। देन एक और काफी इंपॉर्टेंट कोट है आपकी, सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज रूटलेस एंड हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी इज फ्रूटलेस। ये डायरेक्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको याद भी रख लेना, यू कैन यूज इट एज वेल। तो हिस्ट्री के बिना सोशियोलॉजी रूटलेस है, और सोशियोलॉजी के बिना हिस्ट्री आपकी फ्रूटलेस है। तो यहाँ पर रूट्स आप देख सकते हैं, डेटा एंड हाइपोथेसिस, दीज आर प्रोवाइडेड बाय हिस्ट्री, और फिर आपका सोशियोलॉजी आपका एक तरह से काइंड ऑफ द होल ट्री, यू कैन से, राइट। तो डेटा, हिस्टोरिकल डेटा दैट हैज बीन यूज्ड बाय मैनी सोशियोलॉजिस्ट, मार्क्स ने यूज किया हिस्टोरिकल डेटा को, डर्कहाइम ने यूज किया है, राइट। तो सर्टेन हिस्टोरिकल इन्फ्रेंसेस हैव बीन यूज्ड, मार्क्स ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में हिस्टोरिकल यहाँ पे हिस्टोरिकल इन्फ्रेंस यूज किया हुआ है, राइट। वेबर ने इन प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में भी ही हैज यूज्ड द हिस्टोरिकल इन्फ्रेंस, राइट, बिकॉज यहाँ पर वेबर ने एक हिस्टोरिकल पर्टिकुलर आइडियल टाइप, राइट, स्टडी किए इन प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के अंदर। एक पर्टिकुलर एक डिफरेंट आइडियल टाइप स्टडी की थी, उसमें आपका क्या था, हिस्टोरिकल पर्टिकुलर आइडियल टाइप। और प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के अंदर भी वेबर ने ही हैज यूज्ड द हिस्टोरिकल इन्फरेंस, राइट। प्रित्रम सोरोकिन, सोरोकिन ने जो है, अगेन ही हैज यूज्ड हिस्टोरिकल इन्फरेंस इन हिज स्टडी ऑफ सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स। सो फिर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट मैटर जो है हिस्टोरिकल, सब्जेक्ट मैटर जो ओवरलैप करता है ऑफ हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, न्यू एनसीईआरटीज ऑफ हिस्ट्री कैन बी सीन एज एन एग्जांपल। देन रेडक्लिफ ब्राउन ने बोला सोशियोलॉजी इज नोमोथेटिक while history is idiographic. Nomothetic means generalized. So sociology is more about generalization and history is more about unique events, idiographic. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेबर की बात करें, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में इज मोर अबाउट, he has used this particular event but he has gone to further to generalize it, राइट। सो यहाँ पर ये ओवरलैप की हम बात कर रहे हैं, राइट, कि कैसे उन्होंने एक पर्टिकुलर इवेंट को उठाया और कैसे कैपिटलिज्म डेवलप करता है विद प्रोटेस्टेंट एथिक्स, बट ही फर्दर जनरलाइज्ड इट, राइट। सो आगे आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि आज की जो हिस्ट्री है, टुडे हिस्ट्री इज फार मोर सोशियोलॉजिकल। फॉर एग्जांपल सोशल हिस्ट्री जो है पार्ट ऑफ ब्रांच ऑफ हिस्ट्री is a social history that is overlapping phenomena that can be seen.
राइट। और आज अगर हम देखें वैसे तो हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव होती है, बट इट इज नो लॉन्गर प्योरली डिस्क्रिप्टिव, राइट। आप केवल इवेंट्स को नहीं स्टडी करते हैं हिस्ट्री के अंदर, नॉट ओनली लिंक टू द टाइम एंड इवेंट्स, बट व्हाई एंड हाउ, जो कि सोशियोलॉजी का शुड बी द एरिया, बट नाउ हिस्ट्री ऑल्सो स्टडीज दिस व्हाई एंड हाउ ऑफ द इवेंट्स, cause and effect भी स्टडी करता है। सो दीज थिंग्स आर ब्रिंगिंग द टू डिसिप्लिन्स क्लोजर टू ईच अदर। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। सो पॉलिटिकल साइंस इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टेट, पावर, इनको स्टडी करता है, वेयर एज सोशियोलॉजी इट स्टडीज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, जिसमें आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन है दैट सोशियोलॉजी स्टडीज। इफ यू सी पॉलिटिकल साइंस इट स्टडीज द प्रोसेस विद इन द गवर्नमेंट, उसकी स्ट्रक्चर फंक्शंस के बारे में, वेयर एज sociology studies the different institutions, different social institutions and their interrelationship between them। और उसके अंदर आपको political institution भी also one of the you can say institution that sociology studies। government भी एक institution है, इसको study करता है। so अब इनका कन्वर्जेंस के बारे में देखें कि कहाँ कहाँ पर डिफरेंट थिंकर्स ने बोला है और इसके रिगार्डिंग कैसे इंटरलिंक्ड है दोनों डिसिप्लिन्स। मार्क्स मार्क्स अकॉर्डिंगली जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो पॉलिटिक्स है, सो मार्क्स अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। सो यू कैन से द गवर्नमेंट, स्टेट, पावर और द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन is the part of the superstructure, right? And it shapes the social classes or decides about the social classes, right? तो इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि मार्क्स कि कैसे पॉलिटी और सोशियोलॉजी आपस में, सोशल क्लासेस आपस में इंटरलिंक्ड है। देन पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल स्टडीज बाय मिचेल्स, वेबर एंड पेरेटो। अगर हम देखें इफ यू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज, दीज आर द सब्जेक्ट मैटर जो कि दीज सोशियोलॉजिस्ट हैव स्टडीड, राइट? पॉलिटिकल पार्टीज, देयर मेंबरशिप, राइट? व्हाट आर द conditions that decides the membership of political parties, elite voting, elite classes, ठीक है, वोटिंग बिहेवियर। अब ये सारे पॉलिटिकल, देखा जाए पॉलिटिकल पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग ये टर्म्स हैं, राइट? ये कॉन्सेप्ट्स हैं, बट द सोशियोलॉजिस्ट हैव स्टडीड इट बिकॉज द सोशियोलॉजिकल नॉर्म्स, द कल्चरल नॉर्म्स, द सोशल ग्रुपिंग्स, डिफरेंट सोशल फिनोमिना, दे अफेक्ट्स these। ब्यूरोक्रेसी, अब ब्यूरोक्रेसी आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, बट इट वाज स्टडीड बाय वेबर। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती है, और दीज आर आल्सो शेप्ड बाय द सोशल सेटिंग्स। वेलफेयर पॉलिसीज, वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, सब्सिडीज जैसे होती हैं, राइट? अभी वेलफेयर पॉलिसीज बेसिकली सोशल इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए है, राइट? Now, sociological studies, they helps in deciding the welfare policies of the government। Identity politics, for example, caste politics, caste-based politics जो है इंडिया के अंदर, now it is very much linked to the sociology, है politics। Similarly, gender in politics, right? It is again bringing the two disciplines together। Sociological studies are being used in deciding the politics। Gender in politics, the constitution has given 1/3 representation to women at the local bodies, 73rd and 74th amendment act। gender in politics भी हम स्टडी करते हैं। social policies of the government, जैसे welfare policies गवर्नमेंट की हैं, now the studies of the sociologist, they are taken into consideration while deciding the social and welfare policies of the government। M.N. Srinivas, Indian sociologist, he studied the वोट बैंक पॉलिटिक्स। वोट बैंक, ठीक है, वोट बैंक होता है किसी का डिफरेंट कास्ट के अकॉर्डिंग वोट बैंक है, डिफरेंट सोशल ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग वोट बैंक है। सो देयर इज वेरी मच रोल ऑफ सोशियोलॉजी व्हाइल यू सी डिफरेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स। नाउ ऑन द अदर हैंड, जो पॉलिटिकल सिस्टम है दैट अफेक्ट द सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कि कैसे अफेक्ट करता है, बिकॉज फॉर एग्जांपल फैमिली, जो एक फैमिली इज वन ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन। नाउ हाउ फैमिली इज बीइंग अफेक्टेड बाय द पॉलिटिकल सिस्टम, फॉर एग्जांपल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट
रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है, चाइना में आपका वन चाइल्ड पॉलिसी, टू चाइल्ड पॉलिसी, नाउ इट इज डिसाइडिंग द फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, राइट? सो दिस इज हाउ दीज टू डिसिप्लिन्स आर लिंक्ड टू ईच अदर, ठीक है। इसके अलावा यू सी सोशियोलॉजी जो है, इट प्रोवाइड्स डेटा एंड बेसिस, ठीक है, कि कैसे ये डिफरेंट वेलफेयर पॉलिसीज जो है चलानी है। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज यू सी द कास्ट, kinship, right? Demography. These are very much study areas of sociology, but these decide the electoral politics, right? And if you talk about the in contemporary times, there are certain political revolutions are happening. And in these political revolutions, for example, Arab Spring, now the different people, they are different political scientists, they are taking help of Marxist sociological ideas to study or to understand the different political revolutions happening in the contemporary times, for example, Arab Spring. Now we come to the next topic. Next है आपका sociology and anthropology. So anthropology, it deals with the study of the primitive society, simple society को study करता है, and it actually emerged as to study the primitive societies in non-Western countries. उस दौरान ये develop हुआ था anthropology, whereas sociology, it deals with the study of industrialized society, kind of more modern society, the recent times, and it emerged basically as a to provide explanation to the challenges posed by the modernity and all. Right now, अगर और differences की बात करें between sociology and anthropology, anthropology, it also deals with the physical aspects. It also studies the physical aspects related to evolution. Biology की भी आप देखते हैं कि terms वगैरह आती हैं, sorry, in anthropology, right? Whereas sociology studies the social and cultural aspects of the society, right? Anthropology, it is more about, you can say, the researcher that studies, that observes what they see, एक तरह से field study करता है, the kind of the methods and the kind of the research methods, field study, participant observation, the participant that observes and records its observation, और उसका accordingly that develops the research. तो kind of qualitative research है ये, right? It essentially qualitative. Sociology में क्या है कि दोनों है, it is qualitative as well as quantitative. कि यहाँ पर अगर हम if you see the methods, questionnaire भी use करते हैं, here we also use the statistics, different statistics as well, ठीक है? So these are differences you can see. Now, if you see in anthropology, the concept given, one of the concept was functionalist. The functionalist, right? The functionalist, G.P. Murdoch and Malinowski. So the functionalist, they have developed theories for both. For anthropology, so functionalism as a concept is being used in both anthropology and sociology. So this is how two disciplines are coming towards each other. They are converging towards each other. So basically, it is essentially anthropological concept, functionalism, but it is being used in sociology as well, as given by Murdoch and Malinowski. If we further see the convergence, the Talcott, Parson, and Merton, the functionalists, their approach to study the industrialized society. ठीक है, कैसे इन्होंने इंडस्ट्रियल सोसाइटी को स्टडी किया यूजिंग द functionalist approach. A functionalist approach is basically the anthropological approach, but that is equally being used in the sociology. अब आपका field studies, kind of the participant observation, you can say, is kind of the method used by the anthropologist. Now William White used participant observation.
इन स्टडिंग द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, बिकॉज सोशियोलॉजी आपका मॉडर्न सोसाइटी को स्टडी करता है, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। नाउ मेथड यहाँ पर यूज किया इन्होंने काइंड ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड, जो कि जनरली यूज होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, लेकिन यूज कहाँ किया है इन स्टडिंग द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सो दिस इज हाउ द टू डिसिप्लिन्स आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर। विलेज स्टडीज यूज बाय एमएन श्रीनिवास एंड एससी दुबे, ये भी आपका दिखा रहा है कि हाउ these two disciplines are converging towards each other. So that's all for two lectures. So if you like this video, please subscribe and share. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.